ओके तो कल हम लोगों ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक हमने कल कंप्लीट किया था और आज हमको एक स्टेप अहेड जाना है एंड एज आई टोल्ड यू दैट द रियल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे बेसिकली टू गो फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए दे आर इम्पोर्टेंट एंड वी विल गो थ्रू वेरी बेसिक्स और उसमें से एक चीज ये है दैट व्हाट वी वुड वांट टू नो हमको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वेशन हियर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ व्हाट आर व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव चार्ज मतलब लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव मतलब लाइक चार्जेस और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस तो आपको पता ही होगा दैट द फोर्स बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज रिपल्सिव like charges repel each other and unlike charges attract each other but it is my duty to mention it here so let's talk about forces between charges okay so we already know this thing so it was experimentally observed it was experimentally observed that charged objects charged objects exert forces on each other. Charged objects exert forces on each other, right? This force can either be attractive or repulsive. This force can either be attractive or repulsive. Repulsive, right? So attractive कब होगा, repulsive कब होगा? We know this already. So the force will be attractive if the charges are unlike मतलब positive and negative, right? So like charges repel while each other each other while unlike charges attract each other. Okay, good. So by the way, some students ask पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है? Why like charges repel each other and why unlike charges attract each other? So there is no reason for this. Okay, no one can tell you. It is intrinsic property of charges. वो property है, like charges repel करना ही है, unlike attract करना ही है, right? Now this brings us to another question. हमने सिर्फ अभी तक ये मेंशन किया कि अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, ठीक है, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, या फिर किस पे डिपेंड करेगा? व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस? सो दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ. और कूलम्स लॉ को हम दो अलग अलग फॉर्म में लिखने वाले हैं, एक स्केलर फॉर्म एक वेक्टर फॉर्म. एंड वी विल आल्सो सी कि अगर मैंने दो चार्ज को वैक्यूम में रखा मतलब देयर इज नथिंग, और मैंने दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे मतलब तो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर स्टिल एट सेम डिस्टेंस. अगर इसको मैंने वैक्यूम से उठा के पानी में रख दिया तो फोर्स चेंज होगा कि नहीं? अगर होगा तो कितने अमाउंट से होगा, राइट? और अगर मैंने इसी दो चार्जेस को ग्लास में रखा तो क्या होगा? सो वी विल सी what happens when these two charges are kept in different medium, right? So the amount of force between two charges is given by Coulomb's law. So let's just mention it. And Coulomb's law we will be learning in two different forms. One is
scalar form and other is vector form. 10.4 Coulomb's law. 10.4.1 scalar form of Coulomb's law. Scalar form of Coulomb's law. Okay. So let us quickly see what is scalar form of Coulomb's law. फिर हम लोग statement भी लिख लेंगे. Easy है. What Coulomb's law tells us is that if we have two charges q1 q2 separated by distance r, हमारे पास दो चार्ज है q1 q2 और उनका सेपरेशन है r, then the force between these two charges is proportional to product of the charges, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट. So the force of attraction or repulsion between any two point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them, right? Correct. And the force acts along the line joining the two charges. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन ये था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि ये अट्रैक्शन कब होगा जब दोनों चार्जेस अनलाइक है और रिपल्शन कब होगा जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, सेम टाइप के है. So the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest, Coulomb's law is strictly applicable in electrostatics. At rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, right? और जो force का direction होगा, the direction of this force is along the line joining the two charges. Okay, so force is proportional to q1 q2 by r square, right? तो अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k यूज करना है. ये k की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन मेनी फैक्टर्स. लाइक पहले तो आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो. सो द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मतलब आर यू यूजिंग एसआई यूनिट्स और आर यू यूजिंग सीजीएस यूनिट्स, राइट. इसका मतलब whether you are measuring force q1 q2 are in SI system or not, or if you are using in CGS system, right. दूसरा डिपेंड करता है, k का वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द मीडियम, मतलब चार्जेस कहाँ पे रखे गए हैं. चार्जेस एयर में है, वाटर में है, वैक्यूम में है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट. ओके, एंड ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी नो the force between two charges will be attractive if they are unlike, matlab one positive one negative. So what happens if I have one negative charge, ये negative charge है, and we have one positive charge, ये positive charge है, right. So in this case you will have attractive forces. So q1 and q2 are attracted towards each other. If you have both charges as negative, in this case the force is repulsive, so q1 and q2 are repelling each other. Similarly, if you have q1 q2 both positive, even in that case they are repelling each other, right. तो Coulomb's law in vector form हमको सिर्फ स्टेटमेंट और उसके बेसिक फॉर्म से मतलब है. फोर्स का डायरेक्शन हम लोग इन डिटेल आगे देखने वाले हैं, राइट. तो when you talk about charges at rest, there is force, and the force can either be positive
मतलब attractive or repulsive, and the exact formula for the force is given by Coulomb's law, and Coulomb's law actually can be written in scalar as well as vector form. So let us first go ahead with scalar form of Coulomb law. मैंने already बताया आपको, उसका statement जो है हम लिख लेंगे अब. I already told you that the force of attraction of or repulsion between two charges at rest is proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. So let us just put it here now. So official statement, it's not official, just kidding. So it's a statement of Coulomb's law. The force of attraction or repulsion between two point charges at rest is directly proportional is directly proportional to the product of the the magnitude the magnitude of the charges and inversely proportional to square the square of the distance between them, and the force acts along the line joining the two charges. The force acts this force is better to say this force acts along the line joining the two charges, right? So let us say q1 and q2 are two charges separated by distance r. So let q1 and q2 be the 2 point charges at rest with respect to each other and separated separated by a distance r. The magnitude of the force, the magnitude F of the force, capital F of the force between them is given by. So as I have already mentioned that this force F is proportional to Q1 Q2 by R square, which Q1 Q2 by R square, which implies that force F is equal to some constant capital K Q1 Q2 by R square, where K is constant of proportionality and the value of K depends on the system of units being used and on the medium in which the charges are placed. ये important है, where K, capital K, is the constant of proportionality. Its value depends on
just a minute. Yeah, its value depends on the system of units used and the medium in which the charges are placed. Okay, so simple है, extremely simple thing it is. Then what else we should mention here, that the force between two charges will be attractive and it will be repulsive if the two charges are, मैंने बताया है, लिखा है वहां पे, लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव. I don't feel any need of mentioning this thing over here, so we will not write down that thing, but we'll go ahead with next thing that we should know. मैंने आपको बताया था, pardon me, sorry. So as told you, as I said earlier that अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, अगर हमने चार्जेस को वैक्यूम से उठा के वाटर में रख दिया या फिर कहीं और रख दिया, तो द फोर्स विल वेरी, द फोर्स विल चेंज. So how it will change, that depends on a quantity which is called as relative permittivity or dielectric constant. So relative permittivity, or you can say, we also call it as dielectric constant, right? So the idea is very simple. ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है हम डिफाइन करेंगे. देखो, द थिंग इज, अगर हमने दो चार्जेस को फॉर एग्जांपल वाटर में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया, तो फोर्स between two charges in a given medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon, right, where epsilon is permittivity of medium, q1 q2 by r square. तो जो k लिखा था, this is that k for a medium, right. बेसिकली अगर आप इसी दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते तो फोर्स होता 1 upon 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is called as permittivity of vacuum. So epsilon is permittivity of medium and epsilon 0 is permittivity of vacuum. तो ये जो permittivity है, what does it tells you? It just tells you that how easily two charges can interact in a medium. दो charges एक medium में interaction का strength क्या होगा, right? क्योंकि होता है कि कोई medium दो charges को interact नहीं करने दे, कोई medium easily करने दे. तो permittivity is just the amount of measure on the स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन, मतलब फोर्स कितना है दो चार्जेस के बीच में, राइट. तो इट विल डिपेंड फ्रॉम मीडियम टू मीडियम. तो फोर्स इन वैक्यूम इज q1 q2 by r square. ओके, तो इफ वी डिवाइड फोर्स बिटवीन charges in vacuum to that of medium, and remember one thing, यहाँ पे दोनों चार्जेस वही चार्जेस है जो पहले मीडियम में थे, अब वैक्यूम में है. इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, सो वी हैव नॉट चेंज डिस्टेंस आल्सो, राइट. सो एवरीथिंग इज सेम. सो व्हेन यू डिवाइड दीज टू, you will get 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square upon 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r square. So you will get epsilon by epsilon 0.
राइट, बाकी सब कैंसल आउट हो गया। देन ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं के से, नॉट कैपिटल के। सो दैट इज स्मॉल के, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन होता है। दिस इज स्मॉल के। तो मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से। क्या था कि हमारे पास दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड द चार्ज इज q1 एंड चार्जेस आर q1 एंड q2। इन दो चार्जेस को फिक्स डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे मैंने पहले रख दिया, लेट अस से इन वाटर। तो ये दो चार्जेस वाटर में है इन सम मीडियम। द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब इन दो चार्जेस को विदाउट चेंजिंग देयर सेपरेशन, विदाउट चेंजिंग देयर डिस्टेंस, इसको रख दिया वैक्यूम में, एंड द फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन is called as absolute permittivity of medium and epsilon 0 is called as permittivity of free space या फिर vacuum, absolute permittivity of vacuum, right? जब मैं इन दो फोर्सेस को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक रेशो बचता है इप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, उसको हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन आर या फिर स्मॉल के से, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। करेक्ट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। दस इप्सिलॉन आर या फिर के is the ratio of permittivity of medium to that of permittivity of free space, है ना? permittivity up basically absolute permittivity of medium to that of permittivity of free space का रेशियो है। या फिर आप बोल सकते हो it is also the ratio of force between two charges kept at a fixed distance to that of force between the same two charges kept at the same distance, इसका रेशियो है, राइट? करेक्ट। So that's it. So you should know what is K basically, right? So we will note it down. बहुत simple सा चीज था ये. And after completing this, we will also define what is unit charge, right? So the basic idea behind what I have told you so far is हम दो चार्जेस को पहले वैक्यूम में रखे थे या फिर पहले मीडियम में रखे थे, एंड बाद में हमने उसी दो चार्जेस को मीडियम से उठा के वैक्यूम में लाया। फॉर एग्जाम्पल निचली देगा केप्ट इन वाटर एंड लेटर देगा केप्ट इन वैक्यूम। तो जो चार्जेस का सराउंडिंग मीडियम होता है वो फोर्स को अफेक्ट करता है, राइट? सो व्हेन 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 the charges are kept in a material medium, such as water, mica or paraffin paper etc. The medium affects the force between the charges, right? The force between the two charges placed in a medium is given by. So I have already told you the force between the two charges kept in a medium is given by 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square, where
this epsilon is called as, where, let us say equation number 1, where epsilon is called as absolute permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium, right? Similarly, the force between two charges in vacuum, similarly, the force between the same two charges placed in vacuum or free space, placed in free space or vacuum at the same distance r, at the same separation r is given by, तो वही दो चार्ज, वही डिस्टेंस बिटवीन देम, बट ओनली थिंग इज कि अभी आपने मीडियम से निकाल के उसको बाहर वैक्यूम में रख दिया, तो फोर्स विल चेंज एंड दैट विल बी गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, equation number 2, where this epsilon 0 is called as permittivity of free space, permittivity of free space. Okay, easy है, easy thing. Now if we divide equation number 2 by 1, dividing, so if I dividing equation number 2 by 1, what I obtain is, what we get is force between two charges in vacuum to that of force between two charges in medium. अब रेशो लोगे आप, तो 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square upon 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, मतलब what is left is just epsilon upon epsilon 0, और ये जो रेशो है इसको हम लोग बोल देंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ the medium or dielectric constant of the medium, right? The ratio epsilon upon epsilon 0, the ratio epsilon upon epsilon 0 is relative permittivity or dielectric constant of the medium, and is denoted by small k or epsilon r. Therefore, what I can write is k is equal to epsilon r is equal to epsilon upon epsilon 0, which gives us simple thing, epsilon is equal to k times of epsilon 0, right? तो will depend on k value, मतलब बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज 1 या फिर फ्री स्पेस इज 1, तो इसलिए जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो हम लोग एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज के वैल्यू इज 1, राइट? लेकिन अगर हमने किसी और मीडियम में चार्जेस को रखा है तो मैं लिखूंगा इप्सिलॉन 0 इनटू के, क्योंकि इप्सिलॉन इज के टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन 0, राइट? फिर डिपेंड करेगा व्हाट इज
K मतलब dielectric constant for that medium. By the way, what is important is that we should note this, ये जो रेशो है मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है, दैट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमको ये लिखना पड़ेगा, और इट इज द रेशियो ऑफ, मैंने वो नहीं लिखा, सो आई विल जस्ट गो बैक टू द लास्ट पेज, आई शुड बी राइटिंग डाउन, just a minute, so I should be writing down this also, so this is nothing but force between two charges in vacuum to that of force between the same two charges in medium, and from here we also get K into epsilon 0 equal to epsilon, right? So we should note down some important points related to dielectric constant K. Okay, so thus what we have observed is a small k dielectric constant or relative permittivity is the ratio of, लिख देता हूँ, small k dielectric constant small k or relative permittivity is the ratio of absolute permittivity of a medium, absolute permittivity of a medium to that of permittivity of free space. Second, it is also the ratio of the force between two point charges placed at a certain distance, placed at a placed a certain distance apart in vacuum to the force between the same two charges when placed at the same distance in a given medium. Okay, so this much you should know, right? So what I will do now is I will quickly revise what we have learned so far. देखो आज हमने स्टार्ट किया था, we started today with talking about what are the forces between charges. तो forces between charges can either be positive मतलब attractive और repulsive. अट्रैक्टिव कब होगा जब एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्ज है, और रिपल्सिव कब होगा जब यू हैव लाइक चार्जेस, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो ये तो पता लग गया, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, व्हाट इज एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द फोर्स, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन स्केलर फॉर्म, आपको पता है कि स्केलर फॉर्म में वी डोंट रियली टॉक अबाउट डायरेक्शंस, वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो इन स्केलर फॉर्म, द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है इट इज प्रीटी सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, हम लोग फिलहाल दो ही पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट
is directly proportional to the product of magnitude of the charges, मतलब Q1 Q2 के products पे directly proportional है, and inversely proportional to the square of the distance between the two charges, right? तो हमने Q1 Q2 दो चार्जेस लिए, दोनों का डिस्टेंस r है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square. So force is equal to some constant capital K. This is capital K, remember. Okay, I'll just modify a little bit so that you don't end up with confusion. So ये जो है ये capital K है, this is capital K. So F is equal to K Q1 Q2 by R square. K is constant of proportionality and its value depends on the system of units used. मतलब ऐसा सिस्टम है, जैसे ये हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, ऐसा सिस्टम में क्या वैल्यू आती है इसकी, ओके। और ये K this also depends on the medium in which the charges are placed. वाटर में है क्या, एयर में है क्या, माइका में है क्या, तो उस पर डिपेंड करेगा, राइट। देन एज आई एम टेलिंग यू कि हमने अगर चार्जेस को किसी और मीडियम में, एयर और वैक्यूम में नहीं पर कहीं और रखा है, तो द फोर्स विल चेंज and the amount by which the force changes is given by a parameter, a quantity which is called as relative permittivity or dielectric constant, right? तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने अगर दो चार्जेस को एक मीडियम में रखा है तो फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 by r square है ये। गुड दैट आई एम रिवाइजिंग बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक हियर, r square। यहाँ जो इप्सिलॉन यूज किया गया है, दिस इप्सिलॉन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फिर हमने अगर उसी दो चार्जेस को सेपरेटेड एट सेम डिस्टेंस, इसको हमने वैक्यूम में रख दिया तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by r square। फिर हमने इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दिया तो हमको मिला F in vacuum to that of F in medium is equal to epsilon upon epsilon 0। ये जो रेशियो है epsilon upon epsilon 0, इसको बोलते हैं relative permittivity और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम लोग स्मॉल k से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल k और epsilon r is equal to epsilon upon epsilon 0 which is equal to force in vacuum to that of medium, right? So the ratio epsilon by epsilon 0 or F vacuum by F medium is relative permittivity or dielectric constant. So it is the ratio of, so dielectric constant K or relative permittivity is the ratio of absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, or it is also the ratio of force between two charges separated by distance r in vacuum to that in a given medium, right? बहुत simple है। Of course they are kept at the same distance. So we will stop here because we don't have much time and we'll continue other things in the next lecture.